Hello everyone. So in this lecture we will study about the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. So इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये हमारा थर्ड टॉपिक है और थर्ड सब्जेक्ट बोल लो, थर्ड एक्ट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में आता है। तीन कौन कौन सा है जिसमें हमने दो कर लिया है। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 हमने कर लिया। उसके बाद वी हैव फिनिश्ड द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड नाउ दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, या इसको हम बोलते हैं सीधा स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. So we have finished the first two segment in very much detail. This lecture is all about Standing Orders Act, and today we will finish this act because this act is very small. There are only 15 sections in total. Total कितने section है? 15 section ही है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं. We will finish in one lecture. So let's start the class. Fine. So the title is the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. So what is the purpose of this act? Why this act was enacted? So first of all, we will understand the basic thing. So Standing Orders Act 1946 is an important piece of labor legislation in India. It is part of our labor legislation. Okay. It was enacted to regulate what? Industrial employment condition. It was enacted to improve the employment condition, to make out some rules and regulation for the employment. Okay, how the employment will be done, what should be the basis, and some of the rules. So purpose of this act is to improve the employment conditions, okay, and ensure uniformity in the terms and condition of the employments. So whenever a person is employed in any industry or the organization, there are certain rules and regulation that is for every worker, or be it employees or the employers. Okay, so the particular set of rules that is mentioned, it is called standing orders. Standing orders is nothing but a set of rules and regulation, set of rules and regulation. So don't get confused with the words what is standing orders. Standing orders is nothing but a set of rules and regulation for the employment purpose. Okay, we will study in detail everything in coming slides, but as of now just remember कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, एक रूल्स होता है. जैसे रूल्स किसी कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए कुछ रूल्स सेट होते हैं कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, आपकी सैलरी को लेकर के, लीव कितने लीव्स आपको मिलेंगे ईयर में, ठीक है. सो दीज कंडीशंस एंड एवरीथिंग इज पुट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ओके, फाइन. The act mandates employer in an industrial establishment to define and maintain standing orders. Who define these standing orders? Who make these orders? So basically it is the duty of employer who is employing you. Okay, so the employer has mandate to frame out these rules, okay, and outline these rules of conduct for workers. These rules are outlined that how the workers will conduct themselves, how they are going to work in the industry. So these are the basic purpose of standing order. Fine. These standing orders must be certified. So you cannot make any kind of random rules for everybody. See, there are sometimes certain terms and conditions, and those terms and conditions are given where? In this act. On the basis of those terms and conditions, the employer has power to make out the rules. Okay, and once rule is framed, it has to be certified. It is not like you make a rule and it is done. You have to certify it with the certifying officer. There is a certifying officer who certifies these rules, whether these rules are complied according to the act or not, whether these rules are fair or not. So this is certified with the certifying officer. We will study what is certifying officer in coming slides. And approved by the appropriate authority. Authority here is nothing but a certified officer or the labor court or the industrial tribunal or the government. Okay, so authority here means
It includes everyone. Even certified जो certifying officer होते हैं, they are appointed by the government. Ensuring what? The purpose of these things are to ensure fairness and transparency in industrial relation. To maintain the fairness और transparency को maintain करने के लिए industrial relation में the industrial employment standing orders को बनाया गया है, जो कुछ guidelines and rules को define करता है workers के लिए. और ये गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस होते हैं कि कौन बनाता है इसको, एम्प्लॉयर्स बनाते हैं. लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ कंडीशंस है. कंडीशंस क्या है कि जो एक्ट के हिसाब से होगा उसके हिसाब से बनाएंगे, और वो जो बनाएंगे उसको सर्टिफाई कौन करेगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ आपने जो रूल बनाया है वो वर्कर्स के लिए सही है या नहीं है. ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट. नाउ दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ coming to the objective of the act, I have already told you and that will be repeated again. So primary objective of the Standing Orders Act is provide clear and written terms of employment to workers. It means, what does it mean? These rules must be clear and written, and it has to be shared with whom? Shared with workers. जिसके लिए आप कानून बना रहे हो, रूल्स बना रहे हो, उनको तो पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो. तो इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड रिटन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर. वर्कर्स को पता होता है कि व्हाट आर द रूल्स दैट आई हैव टू फॉलो. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स. देयर इफ earlier what used to happen before this enactment, before 1946, what used to happen? Workers were paid less. Sometimes उनको कुछ पैसा मिला था, sometimes ज़्यादा. They were working for 12-13 hours and they were being paid very less amount of money. But after this act, it was clearly defined that how many hours a worker will work. Okay, so these rules, and again this act can be modified and can be changed by the state government according to their need and requirement. Who can modify these acts? These acts basically provide some guidelines. Okay, and on the basis of these guidelines, different state governments, they set their particular rules according to their requirement. Okay, and there is a central government rule as well, so that we will discuss in coming classes or the next slide. Okay, next objective is to promote industrial peace and harmony by minimizing dispute related to employment and conditions. Once rules are clear to everyone, so there will be less chances of dispute. Okay, so this is the purpose. It also ensure uniformity in the condition of service across industrial establishment. Fine. Now, this act applies to industrial establishment employing 100 or more workers. These standing orders act, where it will be applied? Is it applied to every industries, every organization, every set of kind of offices? No, it can be applied only when there are more than 100 workers working in that industry. जिस भी इंडस्ट्री, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 100 से अधिक लोग काम करते हैं, ये जो है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है वहीं पे अप्लाई होगा. ठीक है, इफ देयर आर 99 वर्कर्स वर्किंग इन इंडस्ट्री, देन स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर नॉट मैंडेटरी. फाइन, अकॉर्डिंग टू 1946 एक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द की प्रोविजंस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. अब हम कुछ की प्रोविजंस देखेंगे एंड इंक्लूडिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस. So in total there are 15 section. Total कितने section हैं? Total 15 section हैं, and there are very less to remember because there are very few provisions that are very very important from your examination perspective. But we will cover लगभग सारे हम sections को cover करेंगे. ठीक है, and जो important होगा I will highlight that. So first is very very important कि standing order का जो definition दिया गया, कहाँ दिया गया है? Standing order definition is given under which section? That is very very important because we are studying about Standing Orders Act, so we should know which section
comprises its definition. तो section 2G, section 2G, okay, all the definitions, or you can say interpretations are given in section 2, and there are different clauses like section 2G defines standing order, section 2C define section 2C defines who? Certifying officer. So likewise there are different definition you can read in the Bayerct. I will attach the PDF along with it. Okay, so now स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ दिया गया, किस सेक्शन में? सेक्शन 2G में दिया गया है. सी, अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है मैंने हम आपको पहले बताया. दिस आर काइंड ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर द रूल्स. स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब सिंपल टर्म्स में क्या है? रूल्स है. एक काइंड ऑफ रूल्स दिया गया कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है या इस तरीके से चलाना है. रिलेटिंग टू मैटर्स, व्हाट मैटर्स लिस्टेड इन शेड्यूल ऑफ द एक्ट. इस एक्ट में, दिस एक्ट contains शेड्यूल. बहुत सारे एक्ट में क्या, बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, 1 2 3 4 5. इसमें एक ही शेड्यूल है, ठीक है. देयर आर नो मोर देन 1 शेड्यूल. और उसी शेड्यूल में दिया गया है कि क्या क्या चीजें हैं. तो बिफोर कमिंग टू, हम लास्ट में भी देखेंगे कि क्या क्या शेड्यूल है, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली दिया गया है कि शेड्यूल्स में क्या क्या है. सो व्हाट आर दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ. ओके, तो लेट मी इरेज सो दैट यू गेट थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको. सी, एक मिनट. यस, सो दीज इंक्लूड्स, शेड्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड है? लाइक फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स. दीज शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स. सो व्हाट आर दोज थिंग्स? द फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स. मीन्स workers are classified on basis of different things, like what? Whether they are permanent in nature, okay, whether permanent workers काम कर रहे हैं, टेम्पररी वर्कर्स काम कर रहे हैं, अप्रेंटिस काम कर रहे हैं, फेलोशिप काम कर रहे हैं, एटसेट्रा. तो दीज आर कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स. इट इज गिवन वेयर? इट इज गिवन इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट. ठीक है. सेकेंड इज वर्किंग आवर्स, हाउ मेनी आवर्स दे हैव टू वर्क. शिफ्ट, हाउ मेनी शिफ्ट दे कैन डू. How many holidays, paid holidays, sick holidays. So these all are provided in schedule of this act. Okay. Now the attendance. Every time how many attendance you need to be there at, you need to be present. Otherwise there will be deduction in salaries, etc. So these are provided under the schedule of this act. Okay. Late comings. If the workers come late, so what will be the repercussions of that? So these all are given here. Leave policies, etc. Termination of employment and suspension. What will happen if the employment is terminated? Whether they will be paid the wages or not. Okay. In what situation and circumstances, and what amount of wages they will be paid if they are suspended. So these all are given in this act. Okay. Grievances redressal mechanism. How these issues will be resolved. So these are the given under the schedule of this act. Okay. Acts of misconduct and disciplinary actions. So basic क्या है, शेड्यूल में क्या दिया गया है. तो अगर आपको एक्ट में कहीं शेड्यूल दिखे तो शेड्यूल का मतलब होता है कि शेड्यूल में ये सारी चीजें दी गई हैं. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. सो बेसिकली वेयर दिस एक्ट इज अप्लाइड, where it is applied, or we have already discussed it, but now make it clear. And it is given under section 1 clause 3. सेक्शन 1 में दिया गया. सेक्शन 1 में क्या दिया गया क्या कि ये एक्ट अप्लाई कहां होगा. जैसे हम बोलते हैं ना, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ द इंडिया. So basically these kind of title and application are given under section 1, and clause 3 talks about which kind of industries where it will be applied. So हमने पहले भी किया था कि जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहां पे ये एप्लीकेबल होता है. और ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 1 में.
सेक्शन 1 क्लॉज 3 में। ओके, तो सेक्शन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि इट विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर आर मोर देन 100 और मोर देन 100 वर्कर्स वर्किंग देयर। ठीक, दिस थ्रेशोल्ड मे बी vary based on amendments or state specific rules. As I already told you, states can amend according to their requirement. State government has power to amend this act, or they can make out some rules, additional rule according to their requirement of the state. Okay, but in general, if the question asked, so you have to remember 100 or more than 100 workers. Fine. The appropriate government. Who is the appropriate government? Central government or the state government? Central or the state government. May extend the act to establishments with fewer than 100 workers. If the governments think that it will apply 90, it can apply to 19 workers industries. It can also apply to where the worker is less than 100. So it is the discretion of the government. They can amend according to their need and requirement. फाइन। सो वैसे एग्जामिनेशन में आपसे ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि 100 या 100 से ज़्यादा। दे आस्क वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। नाउ सेकेंड सेक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। जैसे हमने ट्रेड यूनियन एक्ट में देखा था, ट्रेड यूनियन एक्ट में हमने क्या देखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रार। देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ को। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सर्टिफाइंग ऑफिसर है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ट्रेड यूनियन में क्या था? रजिस्ट्रार का बड़ा रोल था। द रोल ऑफ रजिस्ट्रार वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेड यूनियन एक्ट। हेयर इट इज सिमिलर टू सर्टिफाइंग ऑफिसर। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर का भी रोल कुछ कुछ सिमिलर है। और सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, जैसे वहाँ पे क्या होता था? रजिस्ट्रार जो है सर्टिफिकेट देते थे, रजिस्टर करते थे उसके लिए। यहाँ पे उसी प्रकार से सेक्शन 5 में क्या दिया गया है कि जो है सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको? सर्टिफिकेशन फॉर व्हाट? फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मतलब एम्प्लॉयर क्या होता है? लेट्स सी एग्जांपल। एम्प्लॉयर जो है, ही मेक्स रूल, ही और शी और दे, आई वुड से दे मेक रूल्स। रूल्स मीन्स व्हाट? स्टैंडिंग ऑर्डर्स। रूल्स मीन्स स्टैंडिंग, दे मेक सम रूल्स, but these rules not be implemented directly. This rule has to go through certifying officer. Certifying officer के पास जाएगा। Once they certify कि yeah it is okay, then only they will be implemented. Fine. So you need to make it clear कि प्रोसेस क्या है। तो ऐसा नहीं कि रूल बना दिया एम्प्लॉयर ने और वो लागू हो जाता है, नहीं। सर्टिफाइंग ऑफिसर्स को सर्टिफाई करता है, तो उसी को बोलता है सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। Now the certifying officer is, एक मिनट, सर्टिफाइंग ऑफिसर का डेफिनेशन जो है कहाँ दिया गया है? ये 2C में दिया गया है, सेक्शन 2C। तो ये चीज याद रखिएगा। एग्जामिन्स द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। सर्टिफाइंग ऑफिसर व्हाट ही डू? ही विल एग्जामिन द ड्राफ्ट made by the employer, whether it is correct or not, it is fair or justified or not, okay, and ensures that they are fair and comply with the act. He or she also ensure that the draft is complied with the provisions of the act, it is not violated. So this is the work of certifying officer, which certifying officer is defined under which section? Section 2C, याद रखिएगा, ठीक। Now the officer has some power, like the officer may modify or add to the draft to ensure compliance. If there is any missing points or need to do addition, etc., the certifying officer can do according to the provision of the act. Getting my point? Now we talk about one of the important section, that is appeal. See what happens. Appeal का मतलब यहाँ पे क्या है? That we have to understand. Suppose draft was done. First step is it was drafted, draft was done. Done by whom? By the employer.
Now second step is this draft will go to certifying officer. This draft will go to certifying officer, who has the ultimate power to certify whether it is right or wrong. Okay, suppose certifying officer says it is done, means he certifies it. Fine, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. Now what happens? There are chances, no doubt, there may be some discrepancies. Suppose there is still some issues or discrepancies जो लगता है वर्कर्स को लगता है कि देयर आर स्टिल समथिंग मिसिंग इन दिस ड्राफ्ट और द स्टैंडिंग ऑर्डर, तो दे कैन फाइल इन अपील इन द कोर्ट ऑफ लॉ. फाइन. अगर उसके बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, सर्टिफिकेशन के बाद भी वर्कर्स को लगता है ऐसा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट, so they can go for the appeal. Fine. So this appeal is given under which section? Section 6. That's why it becomes important. Now what happens in appeal? It allows employers, workers or trade unions to appeal against the certifying officer's decision. Suppose जस्ट वी हैव डिस्कस्ड कि सर्टिफाइंग ऑफिसर के सर्टिफिकेशन के बाद भी अगर वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को या ट्रेड यूनियन मतलब वर्कर्स ही हुए, को कुछ दिक्कत लगती है तो दे कैन गो फॉर अपील. फाइन. टू एन अपीलेट अथॉरिटी. एंड हु इज अपीलेट अथॉरिटी हियर? यूजुअली द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल. और हम लोग लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बारे में ऑलरेडी हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ा है. फाइन. Now here the appellate authority's decision is final. Getting my point? Now next section is section 7, which talks about date of operation of standing orders. So basically what this section is trying to say is when this will be applicable. Suppose standing order is passed. Standing order is passed. And when they will be operative, मतलब execute कब किया जाएगा उसको, that is given under section 7. So it specifies that certified standing orders come into operation on the expiry of 30 days. Means when it is passed by the certifying officer, after 30 days of approval, it will be implemented. Fine. But if there is appeal, if in between those situations, those days, if it goes for the appeal, then it will be delayed, it will be extended. Otherwise 30 days के आफ्टर, 30 दिन के बाद जो है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा ऑर्डर के बाद. फाइन. नाउ section 8 we will talk about register of standing orders. When standing order is passed, it has to be registered. Fine. So it requires the certifying officers to maintain a register for all standing orders, which must be open for inspection by any person. So the certifying officer has one responsibility to maintain the registration process of standing orders. All the standing orders has to be maintained by him or her. Fine. And one more thing, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ certifying officer. Who are certifying officers? Certifying officers कौन होते हैं? They can be labor commissioner. Generally they are labor commissioner होते हैं वो, or regional labor commissioner, or the appointed by the government. Okay, so generally they are labor commissioners. Fine. Now the posting of standing orders. Posting means the publication. Publication for whom? To everyone. Workers. Now the mandates that section 9 talks about publication or the posting of standing orders, mandates that certified standing orders to be prominently displayed in the workplace in English and the local language. Fine. English में और local language में इसको publish करना होता है. Employer must provide a copy of the standing orders to every worker.
the employer has responsibility to provide the copy of standing orders to every worker or the trade unions. Fine. Now this is very important. Section 10, not section 10 itself is important, but the provision in section 10 is very important. The duration and modification of standing orders. So if standing orders is certified and it is published, it is posted, so what modification it is required to be done, and whether it will be modified or not, and what are the duration of modification, that is very important. यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है. So certified standing orders remain in force until modified. Once it is posted, once it is published, it will be prevalent and it will be executed. But there need to be modification. If there is a requirement of some modification, it can be modified. So modification can be proposed by whom? Employer or the workers. If there is need to some modification, लगता है कि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, दो एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं और वर्कर्स दोनों को लगता है कि अगर इफ देयर इज नीड टू चेंज तो दे कैन गो फॉर मॉडिफिकेशन, बट दे मस्ट बी submitted to the certifying officer for approval. But before doing that, this proposal has to be given to certifying officer, and once certifying officer approves it, then only it will be modified. Getting my point? So this is not important. Important is this point. So what is the duration of the modification? यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं. This is question. Until the expiry of 6 months. 6 months is keyword here. Until the expiry of 6 months from the date on which the standing orders or the last modification thereof came into operation. What does it mean? It means, suppose a standing order was passed. A standing order was passed or published, you can say. I'm writing here passed. So on 1st January 2025. Okay. Now what happens if there is need of modification? So it will be modified only after 6 months. Second thing, suppose there has been some urgency and the government took the decision to no, there are need to some modification, and suppose this modification was done in March, on 23rd March, first modification. So only after 6 months another modification can be done. So what is question here? The question here is until the expiry of 6 months from the date on which the standing order, जब स्टैंडिंग ऑर्डर को बनाया गया, उसको पोस्ट किया गया, उसके 6 महीने बाद ही आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो. या फिर अगर कभी मॉडिफिकेशन हुआ, इफ देयर हैज बीन सम मॉडिफिकेशन ऑन एनी पर्टिकुलर डेट, second modification will be done only after 6 months of that previous modification. Getting my point? कि जो second modification होगा वो 6 महीने बाद ही होगा पहले modification से. So this you have to keep in mind, and it is given under section 10. Now section 10 capital A, it is very very important from examination perspective. इस पूरे एक्ट में कुछ याद रखो ना रखो, ये जरूर याद रखना, ठीक है. Where any workman is suspended by the employer. Suppose a worker is suspended by the employer. So this section is why it becomes very important, because this section deals with the suspension or the termination of the employment and what are the wages that will be given to them. So where any workman is suspended by the employer, pending investigation, if there is suspension, then suppose there is pending investigation or inquiry into complainants of the charges of misconduct against him, the employer, written, it is very important, the employer shall pay to such workman subsistence allowance. So if question comes into your examination that subsistence allowance is given under which section, then it is given under section 10A. Very very important. First keyword is subsistence allowance. मतलब कि सपोज कोई वर्कर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है या उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ इंक्वायरी चल रही है उनके ऊपर, तो
उसको कुछ अलाउंसेस मिलेंगे, उनको पूरी सैलरी नहीं दी जाएगी, बट देयर विल बी सम अलाउंसेस फॉर सब्सिस्टेंस, मतलब खुद के जीवन व्यापन करने के लिए देयर हैज टू बी समथिंग टू बी गिवन टू देम, टू द वर्कर्स. सो व्हाट आर दोज अलाउंसेस? ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, दैट वी विल डिस्कस. एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस, मतलब इफ अ वर्कर इज गेटिंग 1 lakh per month, in case of the suspension or the pending investigation, they have to be given 50,000. For how many months? For how many days? For first 90 days. 90 days तक जो है उनको कितना मिलेगा, फर्स्ट 90 days तक, यानी 3 महीने तक उनको 50% ऑफ द, उनके जो सैलरी, उनके वेजेस जो मिल रहे थे, उनका 50% मिलेगा. फाइन, इट इज फॉर फर्स्ट 90 days. Second point, after that, after this 90 days is over, then at the rate of 75%, पहले 50 मिलता था, अब कितना मिलेगा, 75%. मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, दे आर नॉट डिक्रीजिंग. फॉर द फर्स्ट 90 days they are given only 50% of the wages. Now after 3 months or 90 days they will be given 75% of the wages. Okay, and such wages for the remaining period of suspension. जब तक वो बाकी 75% कब तक चलेगा, जब तक उसका सस्पेंशन खत्म नहीं हो जाता है. तो यहाँ पे 3 चीज आपको याद रखना है. फर्स्ट याद रखना है सबसिस्टेंस अलाउंस गिवन अंडर सेक्शन 10A, पॉइंट नंबर 1. दूसरा, सबसिस्टेंस अलाउंस कितना मिलता है, 50% ऑफ द वेजेस फॉर द फर्स्ट 90 days, 3 महीने तक. उसके बाद से कितना मिलता है, उसके आगे फर्दर 75% ऑफ योर वेजेस. गेटिंग माई पॉइंट. 1 लाख का यहाँ पे क्या मिलेगा, 75,000. यहाँ पे आपको 50,000 मिल रहा था. ठीक. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, बट इट इज इंपॉर्टेंट. सेक्शन 13A, विच टॉक्स अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स. मतलब who can interpret these orders, the मतलब who can interpret. Suppose if there is some confusion in the standing orders, whether it is not clearly defined, so who has that power to interpret? So it can be interpreted by labor court or tribunal. That's it. It is given as 13A. Now powers of certifying officers and appellate authorities, it is given under section 14. तो it has similar power to civil court, जैसा कि हमने previous acts में भी पढ़ा था कि इनके पास कितने जैसा था, they can ask for summon, they can ask for production of documents, evidences, etc. Fine. So they have the power or like powers of civil court for certain purposes, and such as summoning witnesses, enforcing attendance, etc. Now section 15 talks about rule making power. So again, empowers the appropriate government. Who has power to make rules? The appropriate government, be it central government or the state government, to make rules for carrying out the purposes of the act. Fine. Now लास्ट में शेड्यूल जो हमने पहले भी डिस्कस किया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. शेड्यूल में क्या क्या दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, कि वेदर दे आर परमानेंट, टेम्पररी, फेलोशिप है, अप्रेंटिसशिप है. सो दीज आर गिवन इन द शेड्यूल्स. ओके, वर्किंग आवर्स, शिफ्ट, हॉलीडेज, एंड इट इज नॉट सी how many hours you have to work. This is not given in the act. This can be modified according to the state laws or the other laws. Okay, fine. Like wages act जब हम पढ़ेंगे आगे, उसमें दिया गया है अलग अलग चीजों के बारे में, and it is amended by the state government according to अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं. फाइन. इसमें क्या है, गाइडलाइंस है. दीज एक्ट इज बेसिकली द गाइडलाइंस दैट प्रोवाइड्स कि हाँ आवर्स आपको फिक्स करने होंगे. अब कितने आवर फिक्स करने हैं ये हम दूसरे जगह पढ़ेंगे. फाइन. ये कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स दिया तो वर्किंग आवर्स कितना होगा यहीं पे दिया. नहीं, यहाँ पे बताया गया कि आपको वर्किंग आवर्स फिक्स करने होंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स में. और स्टैंडिंग ऑर्डर्स कौन बनाता है, एम्प्लॉयर बनाता है. स्टैंडिंग ऑर्डर्स कौन बनाता है, एम्प्लॉयर बनाता है. और अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में जो भी चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट है तो उसके हिसाब से. तो यहाँ पे बस ये दिया गया कि हाँ आपको सेट करना है. अब आप अपने हिसाब से सेट करो. ठीक है. अटेंडेंस, लेट कमिंग, स्लीप पॉलिसीज, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्पेंशन, डिसिप्लिनरी एक्शंस, ग्रीवांस रिड्रेसल वगैरह वगैरह, दीज आर गिवन इन द शेड्यूल. ओके. तो वी हैव फिनिश्ड द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, एंड इन आवर जो फर्स्ट जो सेगमेंट है हमारा 9 to 11 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में.
मतलब मान के चलो 10 क्वेश्चंस का हमने कर लिया है आउट ऑफ 50. वी हैव कंप्लीटेड अबाउट 10 क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट. तो अब हमारे पास बचे 40 क्वेश्चंस के. ठीक है, सारे एक्ट इतने बड़े नहीं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बहुत बड़ा था अपने आप में, दैट इज वाई इट टुक लॉट ऑफ टाइम. बट इन जनरल 2-3 एक्ट ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे एक्ट ही हैं. ओके, जैसे हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 3 लेक्चर में खत्म हो गया था, ये हमारा 1 लेक्चर में खत्म हो गया. तो बहुत सारे माइनर एक्ट्स भी हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, 15-20 सेक्शंस वाले. तो दैट वी विल फिनिश इन 1 और 2 क्लासेस. जो बड़े एक्ट्स हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम डिटेल में करेंगे अच्छे से. तो 9 to 11 क्वेश्चंस इस वाले सेगमेंट से इंडस्ट्रियल रिलेशन से पूछे जाते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ से 6-7 सवाल तो यहीं से पूछे जाएंगे. उसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट से कुछ सवाल पूछा जा सकता है. स्टैंडिंग ऑर्डर से भी 1-2 सवाल, 1 आध सवाल पूछा जा सकता है. फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस